स्टेडियम आके कैसा लग रहा है? वेल मेरे लिए तो इनिशियली आई थॉट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो एक जनरली व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट एक दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है कि ये होगा वो होगा. आई फॉरगॉट वन मेन थिंग. क्या? कि यहाँ पे 90% वाले ना मोबाइल के साथ रहेंगे. हाँ. बिकॉज एवरीथिंग फॉर देम इज अराउंड द मोबाइल फोन. सो इट्स गुड टू बी हियर. थैंक्स फॉर द वेलकम. इतने प्यार से इन्होंने वेलकम किया है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी जितना भी समय हम यहाँ बिताएंगे इट विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड विल ट्राई टू मेक द इवनिंग लाइट. एंड आप सबकी खिंचाई होगी बेसिकली, और कुछ नहीं होगा. कैन एवरीबॉडी हियर माई भाई ऑल द वे एट द बैक इज वेल? सबको सुनाए, आवाज आ रही है? ठीक है माई भाई, सवाल जवाब पे हम आते हैं, पर सबसे पहले 2 मिनट अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्या लग रहा है वर्ल्ड कप के बारे में? टीम मचा तो रही है. हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है. अभी हमने एक एड कैंपेन भी किया है. सो आई डोंट वांट टू जिंक्स इट बाय सेइंग एनीथिंग मोर, बट भावनाओं को समझो. एंड इट्स अ वेरी गुड टीम. बहुत अच्छा बैलेंस है टीम का. हर लोग अच्छा खेल रहे हैं. सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड. सो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बाकी समझदार को इशारा काफी है. तो माही भाई, आज ऑडियंस में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं एंड आई बिलीव कि ऑन सम लेवल बीइंग एन एथलीट एंड बीइंग अ क्रिएटर देयर आर सम पैरेलल्स. सो आज कुछ कुछ सवाल मैंने और शरण ने डिस्कस किए जो आपकी जिंदगी में कुछ कुछ जो रिलेटेबल एक्सपीरियंस है जो हमारे क्रिएटर्स को भी रिलेट कर पाए, वैसे कुछ कुछ सवाल है. तो पहला तो आप मोबाइल फोन देख रहे हो इतने, ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि आपको कॉल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यू आर नॉट द मोस्ट टेक सेवी पर्सन. आप फोन रखते नहीं हो आपके पास, आप व्हाट्सएप नहीं करते. डज बीइंग डिस्कनेक्टेड हेल्प? आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट. एंड फोन है मेरे पास. एंड द ओनली टाइम आई रियली लुक फॉर माई फोन इज रात को सोने से पहले, क्योंकि सवेरे का अलार्म लगाना होता है. सो फॉर मी माई फोन बेसिकली डज द जॉब ऑफ वेकिंग मी अप इन द मॉर्निंग. और कैंडी क्रश? कैंडी क्रश इज ऑन द आईपैड. मुझे फोन पे गेम खेलना नहीं पसंद. यहाँ पे काफी गेमर्स भी हैं. सो फोन में दिखता नहीं है. इट्स ऑल टू स्मॉल एंड आई एम एजिंग. सो एनीवेज जो भी खेलते हैं इतना छोटा हो जाता है कि दिखता नहीं है. बट एनीवेज कमिंग अप, व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई फॉरगॉट द क्वेश्चन. आप जब आप डिस्कनेक्टेड रहना पसंद करते हो, डज दैट हेल्प? वाज दैट कॉन्शियस डिसीजन? Especially in our case, it helps in a big way because we are all humans. And जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हो और if you are a known personality, then everybody has an opinion about you. आप कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में एक ओपिनियन होगा. कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग खराब बोलेंगे. And as humans, if you are too much connected to the social media or the mobile phone, you are spending a lot of time over there. आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है. कई बार आपको पता होता है कि बात का कोई रेलिवेंस नहीं है, but because we are humans, you still feel bad. So especially before big tournaments or when you're going through a lean patch, I always advise the youngsters, मोबाइल से थोड़ा दूर रहो. इनफैक्ट अगर मोबाइल देखना भी, अपार्ट फ्रॉम हाउ इट इज सपोज टू बी यूज, अगर इंस्टाग्राम में हो, ट्विटर में हो या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स में हो, डोंट गेट इनटू रीडिंग द कमेंट्स. You have to realize a lot of people, they comment for the sake of having fun. They also don't mean it, but it's fun for them. But when you are going through a lean patch, cricket mein ho ya life mein ho, everything starts to hurt. So anyways, you have so much pressure on yourself. You want to avoid any undue pressure. ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल है. अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो आई वोंट बी थिंकिंग अबाउट इट. एनीवेज जो मुझे सॉर्ट आउट करना है लाइफ के बारे में, उसके बारे में तो मैं सोच ही रहा हूँ. आई हैव क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव पेरेंट्स, गार्जियंस, दे विल हेल्प मी आउट. सो दैट वे इट हैज़ रियली हेल्प मी. एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग द यंगस्टर्स, प्लीज जितना मिनिमल यूज़ करोगे उतना अच्छा है. So I wanted to ask something. So before you retired, I'm sure there was a lot of expectations on you in terms of performing in cricket, and every day would have been really, really difficult in terms of dealing with the expectations. But now that you've retired, has... One second, retired from international cricket. Point to be noted. भाई. Hello. There's a CSK fan. वैसे माही भाई, good. How's the knee feeling? Knee have survived the operation, so now going through the rehab patch and rehab exercises चल रहे हैं. नवंबर तक डॉक्टर ने बोला था you'll feel much better by November, but daily life में ऐसा कोई problem नहीं है. तो retired from international cricket only. Please so, continue. Retired from international cricket. Has life become easier in terms of the expectations and the pressure? Has life become easier in general? Well, frankly, if you ask me, if you're a celebrity in India, if people look up to you, there's always certain amount of responsibility, roles that you're supposed to fulfill, and that expectation is always there. Also, I'm only playing IPL, which means I'm actively playing cricket for 2 months in a year.
In fact, it's slightly more difficult because I'm not playing throughout the year. So now my role and responsibility for CSK or towards cricket, I have to keep myself fit. So I have to plan the whole year where, what I need to do, when I need to do. I'm 42, running 43, which means I have to eat nicely. I can't just eat what I want to eat. You have to train because at the end of the day, nobody cares if you're 42, 45 or 50. If you're competing with people at the top level, you have to be at the same benchmark, what they are setting. They may be 20, they may be 15, they may be 17. So if you're competing with them, you have to be like them. So there's no excuses for that. So that's one of the reasons I find it slightly more difficult. You have to be very motivated. At the same time, your friends keep on complaining. They'll be like, we gave you a lot of time, now that you have retired from international cricket, you have to spend some time with us. You need to eat what we are eating and all of that. Right. So you have to balance it out. So that expectation level, that pressure is still there. My way, I would love to know, थोड़ा मुझे captaincy के बारे में बात करना है, because a lot of people here run their own offices, a lot of them are entrepreneurs, they also have their own teams. एक तो मुझे जानना है कि when did you find out, what was the moment you found out you were going to be captain, and did you think of the moment you were captain like, okay, what am I going to be like in the dressing room, because there's a new leader in the dressing room. तो एक तो कब पता चला आपको? It's very interesting. If I'm not wrong, it was 2007 में हमारा इंग्लैंड का टूर चल रहा था. So they made me the vice captain for the limited over format, ODI में. And then when the seniors, they were not coming for the T20 World Cup, there were, very good chances that they'll make me the captain. So it was a new thing for me, frankly. Coming from Jharkhand, it was Bihar initially. I never thought I'll play for the country. That was the first thing. So, जब country खेलने का ही dream उतना बड़ा नहीं होता है, तो you cannot ever imagine, even in your dreams, कि you'll captain the side. So it was a surprise for me. I was happy, yes. But at the same time, I said, how should I look at it? So I looked at it as an added role and responsibility that was given to me. Not to forget, I had seniors who were part of the side from long before. I was relatively new. 2004 December, I made my debut. So I was like, I'll just keep it as a role and a responsibility. I will never think about myself as a captain. I don't want to change myself in the dressing room. Yes, I have that responsibility of picking the 11. On the field, I have to guide the fielders, take the bowling changes seriously, and I just kept it to that. Outside the field, I never showed to anyone or told anyone, that as if I am the captain of the side, you need to do this, you need to do that, because when they are seniors in the side, you have to earn their respect. That's one of the most important thing. If you are a leader, if you are a boss, you want to have the respect of the people you are leading or representing. So for me, that was my biggest challenge.